Today is a really special day, and we're all gathered here, of course, to celebrate the Kidney Warrior Foundation completing 3 years of togetherness and, of course, extending their helping hand to people who need it. Across the country, across the globe, we have people who have joined this community as caregivers and, of course, the patients themselves. We have drawn inspiration from these patients, doctors, and caregivers, and I think because of that, Kidney Warriors stand really, really tall. But today, while we are celebrating a milestone, we have somebody on our show, on our conference, on our webinar, who makes us actually feel very blessed and extremely privileged. We have with us, you won't believe it, somebody who's completed 43 years of transplant with the same graft. And for people who don't understand that, 43 years ago, he had a kidney transplant, and the same kidney that was transplanted then still is working, and how. And what is even more goosebumpy right now is that the doctor who was his doctor, actually, Dr. Jacob, is also with us. Professor K.R. Sharma had his surgery 43 years ago, and we have with us Dr. Chako K. Jacob, who trained at the CMC Vellore, worked there till superannuation and has undergone advanced training in the subject in Canada and Australia, and has been involved in more than 2,000 kidney transplants. How does he remember this one patient? Why does he remember this one patient? What were the odds about this patient? And how come, actually, in reality, there were no odds? I would like to welcome to our show today the amazing Dr. Jacob. Hi, sir. Such a privilege to have you here. Thank you, Anjali. Good to be with you all. Really good to be with you and all of us here. Doctor, I just want to ask you, as a journey as a doctor, you meet so many patients, right? And you get involved in the trauma, in the triumphs, in the ups and downs of your patients, because while they are your patient, they always will remain your patient. There is a connection of some sort. How do you feel when you get to realize that your patient of 43 years is still with the same kidney graft? And how do you remember him? What were the trials and tribulations? What were the triumphs? And how do you feel right now? I think Mr. Sharma is, of course, the longest surviving in India with his original transplant. But see, in the early days of transplants, in CMC, for example, which was the world center to do the first successful transplant in India way back in 1971, there were very few centers after that. I think the next center to start transplants was PGI Chandigarh, and then Jaslok Hospital, and then several other centers came up. There were very few patients who could afford transplant. In those days also it was quite expensive. I don't know how Mr. Sharma, how much his bill came at the end of the whole thing, but he was fortunate that the government of Rajasthan actually sponsored his treatment to a large extent. So convincing patients that such a treatment was available itself was a battle. And we could not promise them very long-term survivals, but the options were limited. You either went on long-term dialysis, which was not easily available in India at that time, or you underwent a transplant and took your chances. Yeah, and in 1977, when Krishna Ram Sharma had his transplant, he was our 277th transplant. So between 70 his transplant, we had already done around 270 plus. And in that year, he was the 22nd patient on the list. And I'm fortunate to have all this data available because CMC has an excellent record-keeping system. And when you all contacted me saying we want to do this, I just sent a mail to my former secretary, and she pulled out not only the serial number, his hospital number, but even several pages of the hospital records over the years. So I think maintaining a proper hospital record has made a big difference. Now, how do I remember Mr. Sharma particularly? It is mainly, I think, because I've had a long association with Rajasthan. My sister used to live in
Jaipur for over 2.5 decades. So I've had several times I have been there. And of course, see, in the early years of transplants, when we did very few patients, we got to know the patients and their family very well. Unfortunately, many of those from that era are no more with us, but they were the ones who gave us the inspiration and the courage to go ahead with this kind of treatment. Now, I must tell you how we reconnected recently during the COVID era. Sharmaji decided that he must track me down. So he, to find out whether I had survived the COVID onslaught or not. Anyway, so he Googled me, found out that I was working in the Bangalore Baptist Hospital. He rang the hospital, and of course, they would not give him my personal number. So then he found out which days I come to the hospital and rang me at work. So that's how we reconnected after a long time. Because I think, शर्मा जी आप 2008 में गए थे ना CMC, उसके बाद तो नहीं गया ना? नहीं सर, 2010 में गया हूँ, 12 में गया हूँ, 15 में गया हूँ, जाता ही रहा हूँ मैं तो. अच्छा, मैं तो छोड़ दिया ना 2000. So just one minute, doctor. This is such an amazing moment for me right now, and I'm sure for every patient and every doctor and every caregiver, to see how the team is back together, the doctor and patient team, and how when there's a will to track your doctor down, because on one level or the other, they have saved your lives and given you the impetus to go on, encouraged you. Sharma ji, आपको कैसा लगा जब आपको डॉक्टर से बात हुई थी इतने साल बाद? उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई, और इतनी खुशी है कि आंखों में आंसू आ गए. हाँ, हमको भी आंसू आ रहे हैं अभी ये सोच के. इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा. This is so historic. I mean, we all think about different kinds of records in the world and how high somebody can jump and how far they have gone into the sea and all of those kind of things. But this is truly a record of different sorts. It's of the human spirit that has been brought together. I am just so overwhelmed with the whole concept, and anyone who's associated with transplant of any kind would understand why I have a lump in my throat. So Dr. Jacob, I want you to tell us about how it was, considering those days the facilities were very, very less, right? Pardon? The facilities way back then compared to what we have now. Oh yeah, I mean facilities. See, the thing is that lot of the basic treatment, I think, was readily available. In terms of dialysis, we could do comfortably even in the 70s. But in terms of expense, it was very expensive even in those days. The investigative facilities were very few in those days. For example, we did not have central catheters, we did not have ultrasound, we did not have CT scan, MRI, none of those. So we were dependent mostly on basic X-rays and some imaging techniques. The immunological evaluation also was very primitive in those days. In fact, we were not doing tissue typing and cross-matching at CMC in those days. So we had to send the blood to Delhi, where Dr. Kamala Balakrishnan, who had come back from the US, had set up a laboratory. And the blood had to reach there the same day. So we used to get up at midnight, or not get up, we wouldn't go to sleep. We'd have to draw the bloods at midnight, put it into a taxi, send it to Chennai airport to catch the first morning flight to Delhi, and somebody would pick it up in Delhi and hand it over to the laboratory. My God. And 2 days later or 3 days later, we got the reports. So, but now today, I can sit in Bangalore or Vellore or any large medical facility and order all these tests even online and get the report the same evening or the next day. So investigations have certainly become very
very much easier these days. Oh, Uh, yes. Medications, post-transplant medications, in those days, there were only two drugs available: steroids Yeah. and azathioprine, which was marketed in those days by only by one company, Burroughs Wellcome. They had a drug called Imuran, and then there was prednisolone, and nothing else. And even if there was a rejection, the medication which ideally we should give as the first line, methylprednisolone, was not easily available. So My it God. was a hard task to find these drugs. So in those days, giving the medications was like, shooting with a shotgun, trying to kill something. Whereas today you have, precise rifles with which you can, shoot and hit the immune system. So it's made a quantum difference in terms of who you can transplant and what you can expect in terms With of your outcomes. in the outcome. Yeah. Having But said that, doctor, I just want to ask you were talking about the immunosuppression, yeah, and you said that it was just like a shot in the dark because only Imuran was there and only prednisolone was available. yes, And God bless Professor Sharma, because he's managed even till today with the same two medications. And yes. sometimes I think, are we spoiled for choice when we have so many different combinations and permutations and so many weapons in our, in our backyard to shoot right and shoot sharp? Sometimes with all these different kinds of weapons that we have to save a transplant and post-transplant immunology, do you think sometimes there is too much out there, or it's just luck of the draw? No, I think it's good to have a choice of drugs available. And it's a bit like, making avial. You have a particular combination of drugs which work for you, and you get the perfect avial which will work for you and your patient. And but every Yes. patient, having said that, every patient is different, and sometimes you may have to change course or change medications because of complications arising after transplant. For example, the major difference in survival was with the introduction of cyclosporin in the 1980s. I think till then we could, you could expect a survival of around 40 to 50% at 5 years, and that went up to almost 90% at 5 years once both cyclosporin and then, of course, more recently tacrolimus became available. So it's made a big difference, I think, between mid-80s to now. And of course, we have gone through all of these personally, worked on them, and have worked out a combination which works for each individual patient. Doctor, I wanted to ask you, we've spoken about our approach to immunosuppressants. How did you manage in those days the matching, the cross-matching, and the monitoring of the donor and the recipient, considering you all did not even have CT scans, MRIs, things that we just take for granted today? Yeah, I think, as I told you, we used to send the bloods to Delhi and get the cross-matching done. And you could do the tissue typing as well. And that's it. I mean, in terms of monitoring and looking for things like donor-specific antibodies and today's single bead assays, all these were things which were not available. So we sort of winged it and hoped for the best. Yeah, but So, I told yes, you, there are patients who have survived, not this long we don't have, but recently I lost a patient from Jaipur who had just finished 25 years. And she was a bit unique in that her husband had a transplant first, and she oh came my God. forward as a donor at that time. And when we tested her, found out that she had renal failure herself. So the husband underwent a transplant, and a couple of years later, she underwent a transplant. He passed away a few years before her, but she survived for 25 years, and she just passed away a couple of months ago. So we keep in touch with as many patients as possible. I have a family in Guwahati who I started
treating the matriarch of the family in 1972. And of course, she is no more. They have a hereditary kind of kidney problem. So Okay. this is the fourth generation in that family whom I am looking after. Wow. My God. It's so, I don't know, it's just so much of baggage to deal with. You know, you're going to help somebody else and you find out that the donor has become a kidney patient. Then you realize it's a, it's a genetic thing that's happening. Doctor, I want to ask you, I mean, everything is science, maybe, but the heart is also involved. How do you keep yourself uh, happy in spite of all the heartbreak you face with your career and, of course, with your patients, which are part and parcel of the same thing? Sorry, what was that? How do you manage the heart? I mean, of course, being a doctor is all about a science, but there is also a lot of heart that goes into this science. So Yes. how do you manage? Okay, the triumphs are amazing, but how do you manage with the trauma? It obviously affects you on some level. Oh, I think it's very traumatic because particularly when dialysis was expensive and very limited to very few people, it's very traumatic to tell them that. You see, if they did not know that the treatment was available, that's fine. I mean, you don't know and you see. But when they know that there is a treatment and they know they cannot afford it, I think it's very, very traumatic. And it's traumatic as well for the medical team. It's not that, I mean, it's not that we are like Pharaoh, we harden our hearts. We do feel every time you have to turn somebody away or you lose a patient, it is traumatic. But I think we learn to live with it. I think there's no other choice. Yes. Dr. Jacob, I wanted to ask you one question, is that you have been in this business for so many years, 2,000 patients and counting. Started at a point where you did not have what we take for granted today, all the equipment, all the different kinds of immunosuppressants, all the different kinds of testing methods, all the different kinds and platforms of where you can reach out to your patients. How do you feel that you have been part of this history of this country as far as transplant is concerned? How do you react to this change? Do you sometimes just sit back and say, my God, I don't know how I managed way back then? Yeah, I think I mean, I think we are a very privileged group. I feel that we have been able to live through all these developments. And as I told you, in those days, things were fairly uh, basic what we were able to offer. But I think we made up by total commitment to patients and patient care and the empathy. I think that is important. It's very nice to see the availability of all these newer modalities of investigations and treatment. But I also feel a word of caution is required that you don't get carried away and because today there is a great sort of temptation to use a lot of medications, just to get good results. You hit hard, Yes. fair enough, but then there is always a price to pay for heavy-handed immunosuppression. Yes. Things we never used to see in those days, like cytomegalovirus infection, pneumocystis infection, BK virus affecting the kidney. All these are things which have come in after the availability of more potent immunosuppression. So you really need to weigh and balance what should be used, what can be used, and what ought not to be used in a particular circumstance. So I think that is something which comes only with practice. I don't think any medical school can teach you that. I think it's after dealing with patients that several patients that you learn uh, how, what mixture to use for whom. That's right. What do you think would have been the winning point as far as Professor Sharma and his donor, who was his brother? Do you feel that there was one combination? Was it just the medication? Was it because they were related donor?
What do you think was the winning combination for this man? I think Sharmaji probably got a very well matched kidney. Otherwise, it would not have lasted this long. Because see, we calculate transplant survival on something called half-life of the graft. Now, conceptually, half-life is, suppose you take 100 transplants and see at a particular point in time how many of them are surviving. Okay, suppose you take 100 transplants, and if see at 1 year, you expect more than 90 of them, 95% survival at 1 year. Then as the years go on, because of complications, either due to medications, other other medical problems, infections, etc., you will lose a certain number. And so you then you see at the original 100, how many are surviving at 5 years. So that is the half-life at 5 years. So that is 50% surviving at any given point in time is known as the half-life of a transplant. Now, in the situation like Krishna Ram's today, if you today's with a related donor transplant, you expect a half-life of about 17 years for a related transplant and 12 to 13 years for a deceased or a cadaver donor. Yeah. So he is unusual. I mean, 44 years is unusual. And we are trying to find out how long the world record is, but I'm not able to get that information despite writing to several people. So I'm like, when I'm talking to you right now, I'm getting tongue-tied. It is probably one-off, or he is lucky and stuff like that. But does it feel fantastic that the patient that has survived 43 years is your patient? No, it's not. It's not luck. I think it's also the compliance, the willingness to listen to your to the advice to take. I'm sure he has not missed a single dose of medication in these. No, because see the biggest, one of the largest causes of graft loss, particularly in children, is non-compliance with medication. You do well for a few years and then you feel, why the heck should I take this lifelong and stop? And then you get into trouble. So particularly in adolescents and children, because of the side effects of the medications, there is a lot of non-compliance and a lot of people lose their graft. So, taking basic precautions, not I wouldn't say don't eat street food, but be careful about what you eat, careful about what you drink, make sure you take your medications on time, and most importantly, have your regular checkups as advised, so that if things are not going as well as they should, then you have the option of somebody to intervene early rather than after it's too late. Yeah. But do you feel a special happiness because Sharma ji is your patient and that he's come out so well after so many years? Happiness, I think it's a lot of pride actually that we have been able to keep somebody going for this thing. And for him, see the way the family has, his children, he's been able to see them grow up, get married, have their own children. See, all these things are बहुत खुशी होती है ना कृष्ण राम जी? बहुत ज़्यादा खुशी होती है. So all these things make a difference. So I think if we are in even in a small way contributing to that, it's very rewarding. But as I said, it's also a matter of great pride, because I think we put this up on our local CMC alumni WhatsApp group, as well as the Nephrology Association of Karnataka WhatsApp group, that thing. And I think all of them are very, I think also enthused and committed to do better when you see that somebody can, you can get such good results. So it's also a stimulus to work harder to do well. Yes, and it's such a wonderful way
to probably think of the coming year. Yes, 2021, with this kind of stimulus, this kind of hope, this kind of aspiration and dedication. There's one word that you would have to say to all our listeners here today, Doctor, before we close. I think, I mean, one word, if I say, I wish that nobody has renal failure. Oh. Though it would put me out of a job, but if you have renal failure, I think the important things are to get medical attention as early as possible and listen to the advice given. Take your medications on time and follow up as advised. I think those who are compliant and obsessive about follow-up and treatment are the ones that ultimately would do better than the others. Thank you so much, sir. And compliments of the season to you and to your family. Thank you. And it was a great pleasure and privilege to have you while we celebrate 3 years of the Kidney Warriors Foundation. Truly has been wonderful having you with us. Thank you. Thank you, sir. Happy. Yeah. Thank you. Thank you. Same to you. अच्छा जी कृष्णा जी सर बाय नमस्कार सर बाय Bye. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Dr. Jacob, for giving us such wonderful insights, of course, into the journey of medicine, how it was and how it has been. And of course, your amazing patient. Yes, Sharmaji. Please remember to stay tuned to our webinar today because we will be talking up close and personal with Sharmaji, the longest surviving kidney transplant patient with his first graft. Against all odds, simple living and high thinking got him here. So don't go anywhere because this is the place that you're going to get all the information and a lot of fun too. Kidney Warriors Foundation celebrating 3 years. My God, what a journey it's been. And I don't think it would be this kind of journey if we didn't have all of you within our team. And by our team, I mean our community of doctors, patients, caregivers, and of course, people who just volunteer their time and their resources to help other people live better. And that's what Kidney Warriors Foundation has always wanted to do, to make everybody's life worth it, stress-free, and as little as pain as possible. Today we have somebody with us who actually is in the Indian Book of Records, and for a very different kind of record. Do you know what his record is? Well, he has had the same kidney that he was transplanted with 43 years ago. Can you imagine? Yes, from the days when there were no CT scans, no MRIs, just 2 immunosuppressions, actually just 1, and where blood had to be sent far away from home to get it done. This man traveled all the way from Rajasthan and reached CMC Vellore, which is in Tamil Nadu. And that is where he had his transplant. And I am talking about Mr. Krishna Ram Sharma, a retired assistant engineer and a proud father, grandfather, living a healthy and normal life with a single transplanted kidney in Hanuman Nagar, Rajasthan. Namaste, Sharma ji. Namaste. बहुत खुशी होती है आज कि आप हमारे किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन के वेबिनार में, कॉन्फ्रेंस में, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हम लोग 3 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर 43 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप जरा बताएंगे हमको कि आपका जिंदगी कैसा चल रहा है और आपके लिए क्या कठिनाई थी, किले थी, क्या खुशियां थी, आप बताएंगे हम सबको. जी, अब एट प्रेजेंट कोई भी समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है. अच्छा, बहुत ही अच्छा बात है. हाँ, और तकरीबन ये मान के चलो कि ऑपरेशन होने के बाद से मुझे आज तक कभी कोई समस्या नहीं हुई. 0% ही समस्या नहीं हुई. कभी कोई रिपोर्ट नहीं बढ़ी, सब रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल रही, हमेशा ही नॉर्मल रही. मैं प्रत्येक 2 साल के बाद में, यानी कि 78 से लेकर के और 2015 तक लगातार वेलूर चेकअप कराने के लिए गया हूँ और किसी भी टाइम कोई भी रिपोर्ट नहीं बढ़ी हुई, बिल्कुल नॉर्मल रही एकदम. हाँ, हाँ, क्या आदेश है? नहीं, बताइए. शुरू में तो हमें काफी समस्याएं आई, फाइनेंशियल समस्या भी आई और इमोशनल समस्या भी आई,
मैनेज नहीं कर पाए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इवन दिल्ली तक ही गए हुए थे, दिल्ली से बाहर भी नहीं गए कभी, दिल्ली से आगे नहीं गए कभी। माय फिर गॉड। भी बड़ी मुश्किल से सारा मैनेज किया। ये सारा श्रेय मेरे फादर इन लॉ को जाता है, जो काफ़ी घूमे हुए थे, उनको सारा नॉलेज था, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ रिजर्वेशन करवाना है, कैसे व्यवस्था करनी है, ये सब उनकी श्रेय से हुआ। बाकी फाइनेंशियली उन्होंने कोई ज़्यादा हेल्प नहीं की। फाइनेंशियली तो हमने खुद नहीं हेल्प की। हमारे पास एक ट्रैक्टर था, वो हमने सेल किया उस समय। हाँ। और उसकी ट्रैक्टर के सेल करने से ऑपरेशन हुआ और काफ़ी समस्याएं आई। लेकिन समस्याएं आने के बाद और ऑपरेशन होने के बाद में फिर कभी कोई समस्या नहीं आई। बिल्कुल टाइम पे चेकअप करवाना, टाइम पे मेडिसिन लेनी, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और अपना जॉब करना, खूब अच्छा काम किया। ये कभी किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हुआ है क्या। लोगों को पता ही नहीं चलता था, अभी भी पता नहीं है। इवन हमारे मोहल्ले में पता नहीं है कि ऑपरेशन हुआ है। हाँ, वो वो तो सही बात है। अगर मैं आपको कहीं रास्ते पर मिलती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप ट्रांसप्लांटेड पेशेंट जी हैं और 43 इयर्स हो चुके हैं। जी लेकिन शर्मा जी, अभी तो 43 इयर्स होने के बाद जब आप आप पिछले दिनों के बारे में देखते हैं और आप सोचते हैं कि सन 1977 में आपके साथ ये सब हुआ, आपके जी ब्रदर आपका डोनर था जी और आपकी पत्नी बेशुमार प्रार्थना के साथ कॉन्फिडेंट रही कि आपके जी लिए सब ठीक ही जाएगा ना। जी 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 तो जब आपका फैमिली ने सोचा कि आपको ट्रांसप्लांट चाहिए और ये जी करवाना ही है, हम्म। आपने आपका ब्रदर खुद बोले कि वो आपका डोनर बनेंगे कि आपने उसको पूछा? नहीं, वो खुद ही बने, क्योंकि हमारे परिवार में कर्ता धर्ता वो ही थे। अच्छा। सब वो कुछ आपके बड़े काम भाई? करने, हाँ बड़े भाई, सब कुछ काम करने वाले वो ही थे। उन्होंने अपने आप ये कहा कि किडनी मैं दूंगा। उन्होंने किसी ने उनको नहीं कहा कि आप किडनी दो। दिमाग में ये था भी भाई बचना चाहिए, इसी तरीके से बचे थे। अब अमाउंट भी उन्होंने ही लगाया, क्योंकि उनके पास ही था, वो बड़े थे। और या फिर फादर सर्विस कर रहे थे, तो इन दोनों ने अमाउंट लगाया। मेरे पास अमाउंट था ही नहीं, क्योंकि मेरी जॉब जब भी लगी थी, 1 साल हुआ था जॉब लगे हुए। हाँ। सारा खर्चा ही उन्होंने किया, किडनी भी उन्होंने दी, सारा मैनेज उन्होंने किया। हमारी भाभी से ये जरूर सहमति ली गई कि यदि आपके हस्बैंड किडनी देना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इवन उन्होंने लिख के भी दिया कि मुझे यदि ये अपने भाई को किडनी देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बाप रे। है। आपने, आई एसडीएम थिंक, के एसडीएम के साहब के आगे उनके बयान हुए बाकायदा, वाओ। हल्फनामे पे लिख के लिया गया कि कल को कोई केस कर दे, इसलिए उन्होंने लिख के लिया भी ये किडनी दे रहे हैं तो आपको कोई एतराज नहीं है क्या। तो उन्होंने लिख के दिया, मुझे कोई एतराज नहीं। जी My God, this is so amazing. This is for जी everybody who's just joined us. We are talking to a kidney transplant patient who survived with his single graft, the same graft that was transplanted in him 43 years ago. It was his elder brother who donated his kidney without any problem, Shriman Om Prakash Sharma. Mrs. Sharma said she has no problem if the older brother gave the kidney to the younger brother. And 43 years later, both the donor and the recipient have never had any problems, issues, and their life has gone on absolutely fine. शर्मा जी, मैं आपको और एक बात जी पूछना चाहती हूँ। जब आपने अपना ट्रांसप्लांट करवाया और आपका ब्रदर को भी वो डोनर थे, आप लोग दोनों माने अस्पताल में थे, आप लोग दोनों ऑपरेशन रूम में थे, आप लोग दोनों के बदन पर सिलाई हो रहे थे, आप लोग दोनों को दवाई दे रहे थे। आपके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी उस टाइम? भाई, ये तो कल्पना से बाहर की बात है, कल्पना से बाहर है। उन पे क्या बीत रही होगी। 2 बच्चे सच्ची। और दोनों बच्चे हॉस्पिटल में और दोनों का ऑपरेशन हुआ। अब आप कल्पना करो भी क्या होता होगा। बहुत, सोच भी नहीं पाती हूँ। हाँ सोच भी नहीं सकते कि भी। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्वाइव ही हो सकता है ट्रांसप्लांट है वो सक्सेस नहीं हो तो क्या हो। बातें तो दिमाग में सारी ही आती हैं, लेकिन उस वक्त की बातें, जब ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है तो सब भूल जाते हैं पीछे की बातें। हाँ। कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही हुआ होगा। उन्होंने प्रार्थना की होगी कि दोनों सही सलामत ऑपरेशन थिएटर से वापस आ जाएं। अच्छी बात है।
और मजे की बात यह है कि शर्मा हम जी, दो, जी, आप बताइए। हम दोनों भाई अभी भी साथ रह रहे हैं। ओ माय एक गॉड। एक ही घर में रह रहे हैं अभी भी। इवन सो आई हमारे, वांट टू टेल यू, हाँ, यस यस, हम बोलना चाहते सब लोग को, not only that these brothers, one was the donor, one was the recipient 43 years ago, they're still staying together, both are alive, both have no problems by the grace of God at this moment. Every one of you who is watching, put your hands together and say a small little prayer that may this kind of magic hit be part of every patient's life. God bless you all for that. Sharma ji, हमको आपसे और एक चीज पूछनी है। जी आप अभी जब है यहाँ पर, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप राजस्थान में बैठे हुए हैं, मैं कोचिन में बैठी हुई हूँ, बाकी सब लोग पूरे दुनिया में फैले हुए थे। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी आगे जा चुकी है, और आप एक सर्वाइवर हो ट्रांसप्लांट की। जिस टाइम में आपके ट्रांसप्लांट हुई थी उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं था। आपको शायद जी, 3-4 दिन लगे होंगे राजस्थान से सीएमसी वेल्लोर आने के लिए। आपको बिल्कुल बिल्कुल, भाषा की भी भाषा की भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम थी, खाना की भी जी प्रॉब्लम थी, कहाँ जी से जाएंगे कहाँ से आएंगे, पूरा नया जगह। ये नहीं कि फोन पर गूगल कर लिया और आपको सब चीज पता चल गया। तो जब जी, आप आज ये वेबिनार पर बैठे हैं, आपके मन में क्या बीत रही होगी कि आपकी जो जीत है वो खुशी से ज्यादा हो। हमारे लिए तो खुशी से ज्यादा है। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी से ज्यादा है। आदमी कल्पना कल्पना से बाहर की बातें हैं सारी की सारी, कि कितना अच्छा लग रहा है। 40 साल निकल गए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे ही रिकॉर्ड को 50 ईयर तक ब्रेक करता रहूंगा। 50 साल तक मेरा रिकॉर्ड ही तोड़ता रहूंगा, आगे का मुझे पता नहीं। दैट इज सो वंडरफुल टू हियर जी, आप जरूर तोड़ेंगे। लेकिन अभी हमको और एक चीज आपको पूछनी है। अभी जी हम लोग सब किडनी वर्ल्ड के लोग हैं, हम लोग सब ट्रांसप्लांट वर्ल्ड के लोग हैं, हम लोग को पता है कि कंप्लायंस, एक्सरसाइज, डाइट, इम्यूनोसप्रेशन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं आपसे 2-3 दिन पहले बात कर रही थी, आप बोले कि जिंदगी भर जब से आपकी ट्रांसप्लांट हुई है, आप सिर्फ 2 दवाइयां ले रही है, जी और आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल, कोई दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं है। जी, कुछ कुछ भी नहीं है। और आप वही सेम अजुरैन और प्रेडनिसोलोन ले, प्रेडिसोन, जी बस यही 2 टैबलेट ले रहे हैं। जी जी जी, आपने कभी भी एक डोज मिस किया है? नहीं, डोज कभी मिस नहीं किया, कभी आपने भी मिस नहीं किया, 43 इयर्स में कभी भी नहीं मिस कभी किया? कभी मिस नहीं किया। अच्छा। टाइम जरूर आगे पीछे हो सकता है, 1 घंटा लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, हाँ। बाकी मिस कभी भी नहीं किया। Wonderful. So I want all of you who are listening that compliance to your medication and to make sure that it's a religion and to keep taking it on time is very, very important for you to stay healthy and fabulous and fine. Okay. शर्मा जी, और एक चीज मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपने कभी भी आपके डॉक्टर को ना पूछे कुछ किए? नहीं, मैं कुछ प्रॉब्लम हुई ही नहीं मुझे, तो मैं ना पूछे बिना क्या करना था। कभी हुआ ही नहीं कुछ भी। मुझे ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हुआ है क्या। टाइम पे दवाई लेनी, ये बात बिल्कुल सही है। अपनी रूटीन एक्सरसाइज बिल्कुल रेगुलर रखी, कहीं बाहर खाया नहीं, हेल्दी खाना खाया और बिल्कुल बढ़िया रहा। कहीं कोई समस्या नहीं आई, कभी भी नहीं आई, 1% ही नहीं आई। इवन तो ये मान शर्मा, के चलो कि हेडेक भी नहीं हुआ, तो आप हेडेक कैसे भी मान नहीं लोगे। हुआ? जी शर्मा जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ। शायद हमारे मन में ज्यादातर आजकल बहुत सारे चीजें दौड़ती रहती हैं क्योंकि बाहर में इतना इंफॉर्मेशन है। जब आपका ट्रांसप्लांट हुआ था तो आप बोल रहे कि आपको तो लगा भी नहीं कि आपकी ऑपरेशन हुई थी, कि ट्रांसप्लांट हुई थी। कभी कभी लगता है कि जब हमें ज्यादातर पता नहीं चलता है और बस थोड़े ही गाइडलाइंस है, उसी में उसमें जीना ज्यादा आसान होता है। जी, कोई समस्या नहीं है। यदि आदमी अपने आप को डालना चाहे, कोई भी मनुष्य अपने आप को उस लाइन में डालना चाहे तो ढल सकता है। जैसे मैं नमक नाम मात्र का लेता हूँ, तो मुझे वो सब्जी बढ़िया लगती है, खाना भी बढ़िया लगता है। हाँ, जब आपने अपना मन में ध्यान मैंने हाँ, मन में धार लिया कि अपने को ये करना है, तो फिर बस कुछ नहीं होता। नहीं। लेकिन शर्मा जी, मैं बोल रही हूँ, अभी आप बोल रहे हैं कि आपको कभी हेडेक नहीं हुआ। जी 43 इयर्स पहले से आप बोल रहे हैं आपको कभी हेडेक नहीं हुआ। जी आजकल के जमाने के लोग में, हाय भगवान, मैंने प्रेडनिसोन लिया लेकिन मुझे तो आज हेडेक हुआ ही नहीं, उसी टाइम फोन लेके गूगल करके सोच रहे कि क्यों हमको हेडेक नहीं हुआ। वो गूगलिंग में उनका दूसरा हेडेक आ जाता है।
फिर उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन कभी कभार खराब होती है हम लोग के लिए। और जैसे आपने कहा, आपको कभी ये तकलीफ नहीं हुई, आपको हेडेक ही नहीं हुआ, आपको प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, लेकिन आप बताएंगे हमें कि क्यों ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ? क्योंकि आपने अपना रूटीन बहुत ही माने बहुत ही स्ट्रिक्ट से फॉलो किया। रूटीन, तो बिल्कुल। यू नो शर्मा जी हर दिन एक्सरसाइज करते हैं और ठीक से खाना खाते हैं। आपका एक्सरसाइज के बारे में बताइएगा जल्दी से। एक्सरसाइज डेली, मॉर्निंग वॉक, पूरे वर्ष भर। और ये मान के चलो कि 43 ईयर से लगातार मेरी एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक चल रही है। कभी मिस नहीं किया, कभी भी मिस नहीं किया। इवन यदि मेरे को कहीं बाहर जाना है, मान लो मुझे 6 बजे बाहर जाना है, तो मैं 5 बजे उठ के घूम करके और फिर वापस तैयार होकर के 6 बजे निकलता हूँ। घूमने जरूर जाना है। वाओ, अमेजिंग शर्मा जी। और आपकी वेट वही वेट रहा है? बिल्कुल वही वेट रहा है, बिल्कुल कोई, ये मान के चलो कि 1 kg भी नहीं बढ़ा। तो आपकी वेट 43 ईयर से क्या है? तकरीबन 56 से लेकर के 57 के बीच में रहा है। माय गॉड, अनबिलीवेबल। जल्दी से आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? कैन यू इमेजिन, शर्मा जी इज नॉट ओनली अ फैंटास्टिक हस्बैंड, अ ग्रेट फादर, बट आल्सो अ ग्रैंडफादर। तो दादाजी, नाना जी, आप दोनों ही हैं। आपको कैसा लगता है? आप अपने परिवार के बारे में जल्दी बहुत, परिवार में बहुत अच्छा लगता है। मेरी बच्ची है वो डॉक्टर है, और उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं, और बच्चा डॉक्टर है, वो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। उसकी मिसेज है, वो भी डॉक्टर है। वाह, छोटा छोटा बच्चा है, वो प्रिंसिपल है, उसकी मिसेज वाइस प्रिंसिपल है। बिल्कुल सब वेल सेटल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। वंडरफुल। और आप अपनी पत्नी के बारे में बताइए। मेरी मिसेज हाउसवाइफ हैं, और सारा दिन वर्क करती हैं, अच्छी हार्ड वर्कर हैं। उन्होंने बहुत मेरी केयर की। सबसे पहले तो डॉक्टर्स को जाता है ये सारा श्रेय, उसके बाद में जाता है मेरे डोनर को, और थर्ड नंबर पे ये सारा मेरी मिसेज को जाता है, संतोष जिन्होंने जी को इतना, जाती है। हाँ, इतना इतना मैनेज किया, जिन्होंने मेरे लिए अलग से खाना बनाना, हमेशा ही अलग से खाना बनाना, परिवार के साथ ही बनाना। हम 21 मेंबर्स हैं घर में, 21 21 21? मेंबर हैं, 21 मेंबर्स। बाप रे बाप। लेकिन मेरा खाना सबसे अलग बनता है, अभी भी? हमेशा से ही। हाँ जी। अभी भी आप अलग खाना खाते हैं? हाँ, अभी भी मेरा खाना ही अलग बनता है, बाकी सबका इकट्ठा बनता लेकिन आपको कभी दुख नहीं हुआ कि हाय राम, हमको ये खाना है, बाकी लोग सब ये है। खा नहीं, रहे हैं? मेरा तो ये बिल्कुल क्लियर कहा हुआ है, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मेरी जो डाइट है वही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। I want all of us to please take a leaf out of Sharma ji's book. This is such an amazing thing. He said, I don't care what you are eating. I only want to eat what I'm allowed to eat. लेकिन कभी भी आपके मन में ये नहीं उठी, आह यदि मैं चाट खा सकता था, आह अगर मैं तंदूरी खा सकता था, या नहीं, कि मैं जलेबी खा सकता था, कि कुल्फी खा सकता था? कभी नहीं? नहीं, नेवर। कभी दिमाग में आती ही नहीं है बात, कभी भी नहीं आई, पहले भी नहीं आई, और अभी भी नहीं आ रही है। तो आपके दिमाग में क्या है आपके खाने के बारे में? मेरा बिल्कुल नॉर्मल डाइट है। क्या खाते हैं कब आप? कब कब कम ग्रीन सब्जी, कम मिर्चों की, दाल, दही, ये सब चीजें जो नॉर्मल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं। और आपको कभी ये लगता कि आप को अगर आप कुछ और खाते तो आप और खुश रहते? नहीं, ऐसा कभी दिमाग में आता ही नहीं। अब तो ऐसे ऐसा रूटीन बन गया, कभी ऐसा कुछ दिमाग में आता ही नहीं। हाउ वंडरफुल। जैसे कई बार ये पूछते हैं, अब व्हाट्सएप पे भी आता है, मैं ये खा लूं क्या, ये खा लूं क्या, मैं उनको लिखता भी हूँ, कभी ये खाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जब अपने को पता है कि अपने को खाना नहीं है, तो नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, खाओ ही मत। नॉर्मल डाइट लो, बढ़िया रहोगे। एबनॉर्मल खाने की कोशिश करेंगे तो खराब करेगी। so see, this is it, you know what, this is such an amazing thing that Sharma ji has taught us just now, कि हमें जो खाना है बस वही खाते रहें। क्यों हम ट्राई करें कि कुछ और खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर हम लोग अपने मन में ठान लिए है कि बस दही चावल खानी है आज, तो क्यों आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ और खाना है? अगर आप सोच रहे होंगे अपनी जिंदगी में मुझे किसी चीज की कमी है, तभी आपको कमी लगेगी। अगर आपको कमी नहीं महसूस होगी तो आपने कभी सोचेंगे भी नहीं कि कमी है कि नहीं, है कि नहीं बिल्कुल शर्मा जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो शर्मा आपने जी, जी। आपको इस वेबिनार कॉन्फ्रेंस में लेके आने के लिए हमें इतनी खुशी है, और पता नहीं कि कैसे मैं बयान करूं
कि आपने हम सबकी दिलों में और दिमागों में आशा की वो बत्ती और वो किरण फिर से ले आए, क्योंकि 2020 तो इतनी खराब चली है सबके लिए, लेकिन 2020 में बहुत अच्छी चीजें भी आई हैं। और वो एक चीज तो आप जरूर है और आपके खानदान, कि उन्हें आप हम लोग को समझाए हैं और दिखाए हैं कि बस अगर आपने कुछ ठान ली तो उसी रास्ते पर चलिएगा, यहाँ ना देखे वहां ना देखे, है कि नहीं? जी बिल्कुल 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 सही बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा लगा, मुझे भी इस वेबिनार से बहुत अच्छा लगा। यदि को किसी को फायदा होता है इस वेबिनार से तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मुझे तो बहुत जरूर। अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, टाइम पे दवाई लें, डॉक्टर की एडवाइस लें और अपना डाइट है वो नॉर्मल रखें, एबनॉर्मल नहीं बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कल को कोई न कोई चीज़ ज़्यादा खराब कर सकती है। इसलिए नॉर्मल डाइट रहे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और ज़्यादा लंबे सर्वाइव करेंगे। Thank you. And this is the words coming from the longest surviving kidney transplant patient. Sir, 2021 में आप 44 years के हो जाएंगे, जी किडनी ट्रांसप्लांट 2022 में आप 45, तो हम सब की दुआ आपके साथ, और हार्दिक शुभकामनाएं क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के लिए, और हमेशा हम लोग के मन में, हमारे दिल में दुआ रहेगी आपके लिए, आपके भाई के लिए, आपकी श्रीमती के लिए, और जिन जिन ने आपको इतना हेल्प किया, और दोनों डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू जी शर्मा जी। हैप्पी नमस्कार मैडम, क्रिसमस बहुत एंड बहुत अच्छा हैप्पी लगा। न्यू ईयर। आपको भी नए साल मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस डे। बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतना मैनेज किया और कितनी लेबर कर रहे हैं। मैं तो और आपको जरूर भी एक दिन आपका आप जब, तो वसुंधरा मैम और आप इतनी लेबर कर रहे हैं और इतना पेशेंट्स को गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, अब थोड़ा सा थैंक कुछ यू सर। बढ़ा है। हाँ, बट आपके टाइम में नहीं था, और शायद वो अच्छी चीज थी। और अभी हमारे साथ जो है, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप जैसे लोग हमारे टीम पर आ जाते हैं और आप हम लोग के फाउंडेशन के लिए काम करते हैं और बताते हैं कि क्या नहीं करना है, तो हमें तो और भी मजबूत इरादा होते हैं कि हाँ देखिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और पूरा KWF टीम से थैंक यू सो मच सर, बिकॉज आपने सच्ची सब लोग को बताया है कि जो भी हो, हमें निष्ठा लेनी चाहिए और एकदम उसी पर चलना चाहिए, कि हमें कोई कमी नहीं है और किसी और को देख के अपने आप को कम नहीं समझना है, आगे जी चलता ही रहना। जी जी जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। सो ठीक हैप्पी है डे मैडम, टू यू। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड प्रणाम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ठीक। All of you, please remember, this is the place that you can meet so many people from so many different walks in life. Yes. And if you would have any questions or you would like direct access to this amazing man, Sharma ji, you remember that through us, KWF, Kidney Warriors Foundation, you could get there. Any questions, any doubts, any help, we're always there. Yes, just like a friend. You can count on us forevermore. God bless you and see you soon.